Plastics. Plastics are of two types, thermoplastic and thermosetting. Thermoplastic plastics are made up of long chains of polymers which don't cross over very often. When heated, the molecules slip easily over one another. Whereas thermosetting plastics also have lots of long chain molecules, but there are links between them. These cross links prevent the molecule from moving over one another. So in this slide, you can see there are two pictures shown. Which of these diagram depicts the thermoplastic and which depicts the thermosetting plastics? Can you guess it? If you have guessed that left hand side picture is of thermoplastic and the right hand side picture is of thermosetting plastic, then you're correct. In the picture you can see that in thermoplastic, polymers are forming long chains but they are not interlinked. There is no interlinking between each others. Whereas if you look at the picture showing thermosetting, you can say that the long chains are interlinked also, so they are giving a 3D structure. Thermoplastic and thermosettings. The major differences between these two plastics are thermoplastics are plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily, whereas thermosetting plastics on the other hand are plastics which when molded once cannot be softened by heating. So in the picture you can see the examples also. Picture shown is actually giving some examples of thermoplastic and thermosettings. Thermoplastics. Plastics which gets deformed easily on heating and bends easily are known as thermoplastics. So this is the definition of it. As well as this definition also helps you to identify which plastic is actually thermoplastic. Meaning, so if any plastic is bending easily, जब तुम उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मुड़ रही है. Secondly, it deforms easily on heating means उसमें मान लो बॉटल है उसमें हमने गर्म पानी डाला या गर्म कोई भी लिक्विड डाला या कोई सब्जी डाली और उसकी शेप चेंज हो गई या वो फ्लेम के पास रखी हुई थी चीज़ और उसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई. So these two properties are going to help you to find out which plastic it is. If it is changing its shape on heating, one thing. Second, if it is bending, you're easily able to bend it. So that's an example of thermoplastics. So two examples given over here are polythene and PVC. Polythene, all of you know, polythene में सब्जियां लाते हैं सारे carry bags. PVC, polyvinyl chloride is the full form of it. PVCs are often used for making pipes. You can see the picture of pipes over here. Thermoplastics are used for manufacturing toys, combs, and various types of containers. So even the pictures of containers are also shown here. Some more examples of thermoplastics are shown here. Even thermoplastics has an examples of like acrylic, nylon, polyvinyl chloride, polyethylene, polystyrene. Out of these, you can easily see that the above two are actually fibers also. So acrylic and nylon are basically plastics which are being used to make thread, and from thread fabric is being made. Means cloth are being made from plastics even. Now let's talk about the other type of plastic, thermosetting plastics. These plastics, as we have already studied about it, that this plastic when molded once cannot be softened by heating. So once the company has given a desired shape to it, it cannot be remolded. Means you cannot heat it and then you cannot give a new shape to it. Once it has been broken down, then it's useless. Examples are shown in the slide. Water bottles, pipes,
containers, even the cloth clips, computer keyboards, the body of the LCD, radios, and many more such things you'll find in your home, like switches, electrical switches. So, thermosetting plastics are actually, as they are bad conductor of heat and electricity, we can broadly talk about two examples of thermosetting plastics, that is bakelite and melamine. So, these are the two very common examples of thermosetting plastics. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. So it is used for making electrical switches, handles of various utensils. You may have seen the handle of pressure cooker or pans that are used in kitchen. They don't change their shape on heating when the utensils become hot while cooking because they are poor conductor of heat. Melamine is also a very versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenwares, and fabrics which are resistant to fire. So the person who are engaged in firefighting, आग बुझाने वाले जो कर्मी हैं हमारे, तो उन कर्मचारियों के लिए इस तरह के कपड़े इनसे बनाए जाते हैं जिससे कि जब वो आग बुझाने जाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो. Now, advantages of plastics. Plastics are poor conductor of heat, which makes them suitable for making handles of cooking vessels. This we have already discussed. Plastics are poor conductor of electricity, so they are used in electrical appliances. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस प्लास्टिक के थ्रू क्रॉस कर पाती है, मीन्स कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिपेयरिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके हैंडल्स भी इससे बने होते हैं. स्क्रू ड्राइवर्स हैं, पेचकस हैं, प्लायर्स हैं. तो इनके हैंडल्स भी इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिशियंस तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन्स दे डोंट गेट डिजॉल्व इन वाटर. दे डू नॉट करोड और रस्ट, तो इनमें जंग नहीं लगता है. प्लास्टिक सदियों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं. और इनका यूज़ करने ज़्यादा यूज़ होने का रीज़न भी यही बनता है कि क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, चीप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हैंडल करना इजीली है क्योंकि गिरने पर टूटते नहीं हैं, और वक्त के साथ वैसे के वैसे ही रहते हैं. इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, किसी से ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मीन्स करोड नहीं करते हैं. तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होना शुरू हो गए. क्योंकि अगर हम लोहे की बात करें तो उसमें जंग लग जाती है, प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता. And that is the reason it is being used in cars and aircrafts and spacecrafts. So there's no end to it. Even if you talk about your slippers, it's of plastic. Even nowadays, furnitures are made up of plastics. Even decoration pieces are also made up of it. So occupies a wide space in our society. Now, disadvantages. Flammable means it catches fire. So one of the type of plastic catches fire, like that is thermoplastic. So when it catches fire, it melts. So dangerous to be used. Cost of recycling. So this is second disadvantage क्योंकि if you are recycling thermoplastic, तो उसमें भी पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं. Only some type can be recycled, और दोनों तरह की प्लास्टिक्स तो रिसाइकिल भी नहीं होती हैं. थर्मोप्लास्टिक ही रिसाइकिल होती हैं. थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू बायोडिग्रेड, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक प्रकृति में वो उसी कंडीशन में जिसमें है उसी में पड़े रहते हैं, नष्ट ही नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं ही नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर नहीं पाते. धूप, पानी, गर्मी, सर्दी, इससे धीरे 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 बस वो टूटते हैं, और इसमें भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगा देते हैं. Manufactured from natural resources and the raw materials that are difficult to replace. जैसे प्लास्टिक्स हमने बात की थी कि ये बनते किससे हैं. पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है तो उससे फ्यूल वगैरह यूजफुल चीज़ें निकाल ली जाती है. जो बच जाता है उसको दूसरी कंपनीज परचेज करती हैं और उससे फर्दर
चेंज कर करके कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उसमें से एक प्लास्टिक भी है, सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस बचे हुए मटेरियल से बनती हैं, रिफाइनिंग के बाद जो बच जाता है, उसे पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। तो चलो उनको यूज़ तो किया गया, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें बना रहे हैं, तो फिर तो गलत बात है। दूसरा, फिर उसमें ऑयल भी तो खर्च हो ही रहा है ना, जबकि ऑयल प्रकृति में बनने में मिलियन ईयर्स लगा देता है, तो उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा? उसकी जगह पे नया ऑयल तो मिलियन ईयर्स के बाद आएगा।